Namaste Gurukulians. I hope all of you are fit and fine at your homes. In the last video lecture, we have discussed about quantum numbers and types of the quantum numbers. There are four types of the quantum numbers: principal quantum number, azimuthal, magnetic and spin quantum numbers. We have also discussed one or two questions based on these. So let's discuss one more question about this. The question is, what is the total number of orbitals and electrons associated with principal quantum number n is equal to 3? Based on the quantum number, this question: calculate the total number of orbitals and electrons associated with principal quantum number n will be equal to 3. So we have to calculate the total number of orbitals or number of electrons associated with principal quantum number n will be equal to 3. So students, for this we have given the principal quantum number equal to 3. So we have calculate number of orbitals and number of electrons. As we know, as principal quantum number n is equal to 3, so the azimuthal quantum number, value of L, it will be equal to 0 to n minus 1. So you can calculate value of L. So L can be 0, 1 and 2 because it is 0 to n minus 1. So 3, so 3 minus 1, 2. So it is 0, 1 and 2. So the value of ML, magnetic quantum number, या ML, it will be for the 0. It is ML is also equal to 0. So only one value. For the L is equal to 1. ML have 3 value: minus 1, 0 and plus 1. So there are 3 orbitals and here is only 1. And in case of this, it can be minus 2, minus 1, 0, plus 1 and plus 2. These are the 5 values. So there are 5 orbitals. So the total number of orbitals associated with principal quantum number n is equal to 3 will be 1 plus 3 plus 5. So these are total 9. And the number of electron present in each orbital are twice of number of orbital. So you can say that number of electrons, because each orbital occupy 2 electrons, so it is 9 into 2. So you can calculate it 18. So you can easily calculate such types of questions based on the quantum number. There are some short tricks also present there. If we have given principal quantum number, so the number of subcell in the nth cell, first short term is number of subcells in nth सेल. हमने जब ये डिस्कस किया था तब बताया था इट विल बी इक्वल टू n. नंबर ऑफ द सब सेल प्रेजेंट इन द nth सेल विल बी इक्वल टू L. सेकेंड शॉर्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन L सब सेल. हमारे पास कोई भी एक L सब सेल है तो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दीज कैन बी कैलकुलेटेड 2L plus 1. दिस इज आल्सो फॉर ट्रिक. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज L सब सेल. जो भी हमारी सब सेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल. तो सब सेल का नंबर हमारा कितना आया? 2 इंटू 2L प्लस 1. सो इसका क्या कर दे? डबल. सो 2 इंटू 2L प्लस 1.
You can also find out number of orbital directly from the cell. If number of cell are n, so the number of orbitals in nth cell, जो भी हमें सेल दी जाएगी, it will be equal to n square. That is, in this question the number of orbitals we have to find out in the cell. Principal quantum number n is equal to 3. So cell हमें जो भी दी जाएगी उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर. So here can be 3 square is 9, and number of electron in this will be, in the short term, number of electron in nth cell, it come out to be 2n square. So these are the short formulas for the quantum number. First is number of subcell in the nth cell will be equal to n. Number of orbital in the L subcell, it will come out to be 2L plus 1. Number of electron in this subcell, double of number of orbital, 2 into 2L plus 1. And number of orbital in the nth cell, n square, and number of electron in the nth cell is 2n square. अब हम क्या है, कुछ रूल स्टडी करेंगे फॉर फिलिंग द ऑर्बिटल्स, हाउ यू विल फिल द ऑर्बिटल्स इन द डिफरेंट एनर्जी लेवल्स. सो देयर आर सम प्रिंसिपल्स. So our first principle is Pauli exclusion principle. Pauli exclusion principle. According to this principle, no two electrons in an atom can have same set of 4 quantum numbers. Same set of 4 quantum numbers. इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या बताया गया कि किसी भी एटम में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, किसी सब सेल में ले लो या किसी भी सेल के अंदर ले लो, नॉट एनी 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर विल सिमिलर. या इसकी एक सेकंड डेफिनेशन हम ये भी कह सकते हैं, एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, या एन ऑर्बिटल can have maximum 2 electrons, but these must have opposite spin. इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होगी it should be opposite. These must have opposite spin. You can fill electron, there are the 3, 1, 2, 3. With the help of example, number of electrons cannot be filled like this, not like this. So the correct way is this. Number of electrons, these are filled with opposite spin. One spin in the clockwise and second in the anti-clockwise. This is the rules first Pauli exclusion principle. No 2 electrons can have same. You can find out it with the help of any examples. You can take 2 electrons, for these have all different 4 orbitals. हो सकता है उसमें 2 ऑर्बिटल सेम आ जाए, 2 क्वांटम नंबर सेम आ जाए, 3 आ जाए, लेकिन चारों क्वांटम नंबर किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं होंगे.
ये बात किसने कही थी? बाय द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लास्ट में हम देखेंगे तो स्पिन तो ऑटोमेटिकली 2 इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी एटम में हमेशा डिफरेंट होगी। 1 इलेक्ट्रॉन विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो सेकंड इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अप एंड बिलो जो हमने लास्ट क्वांटम नंबर स्टडी किया था, दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर। सो दिस इज द फर्स्ट रूल फॉर दिस। आवर सेकंड रूल इज Hofbauer principle. Second is Hofbauer principle. It is also important. According to this principle, the electrons are filled in order of their increasing energy. According to this principle, electrons are filled in different orbitals of increasing energy। मीन्स इलेक्ट्रॉन्स को हम किस में भरेंगे? अलग अलग ऑर्बिटल्स में। पहले हम कौन से ऑर्बिटल्स को भरेंगे? दोज ऑर्बिटल्स विच हैव लोअर एनर्जी, एंड देन वी फिल द ऑर्बिटल्स विच हैव द higher energy. So we can say that the orbitals which have the lowest energy are filled earlier, then orbitals which have higher energy are filled later. Okay, so how you will decide it ki which orbital will be filled first and which one? So there is one trend is also which is given 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s. You can remember like by this 1s, 2s, 2p, 3p, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d and 4f also present, 5s, 5p, 5d, 5f, and here is 6s, 6p, 6d, here it is 7p. These can be written as 7p up to 6d. So these are the different orbitals in which we have to fill the electron. Then how you will decide? You can remember this trend also, because our next topic, shape of orbital and electronic configuration of the element, which will decide. So according to the Hofbauer principle, electrons are filled in different orbitals with their increasing energy. These can be calculated by using this 1s to 2s, then 2p, 3s. It will be like this. जिन जिन ऑर्बिटल्स पे एरो आ रहा है उस तरह से इसके अंदर हम फिलअप इनको करेंगे। इस तरह से 7 पे आएगा, ये थोड़ा सा ऐसे लेके आएंगे और फिर ये इस तरह से। तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम कैसे फिल करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स विल बी फिल्ड जैसे 5f, 6d और ये क्या है? ये वाला इसमें याद आएगा 7s। थोड़ा सा इसको अगर हम इस तरह से लें एरो को तो ये 7s हमारा यहाँ पर, ठीक है। यू कैन फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। ऐसे सबसे पहले 1s, फिर हम देखो इसको इस तरह से आएंगे, then 2s, after that we come from here, then इस तरह से, फिर हम यहाँ से इस तरह से, यहाँ से यहाँ पर, और यहाँ से डायरेक्टली हमारा यहाँ पर, यहाँ से इस तरह से। तो हम इसको भी याद रख सकते हैं, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी सबसे पहले 1s, देन 1s के बाद किस में जाएंगे हम? यहाँ से घूम के 2s, देन आफ्टर 2s इलेक्ट्रॉन फील्ड इन 2p ऑर्बिटल, आफ्टर द 2p दिस इज 3s, एंड आफ्टर 3s देखो यहाँ से ऐसे जाएंगे, दिस इज 3p, एंड आफ्टर देखो यहाँ से 3p के बाद इट इज
4s एंड आफ्टर 4s यहाँ से देखो ऐसे जाएंगे 3d 4p 3d 4p एंड देन 5s 5s के बाद यहाँ आएंगे 4d 5p 4d 5p एंड देन 6s एंड देन यहाँ से ऐसे गए 4f 5d 6p 7s देन 5f 6d एंड 7p. Almost all elements electronic configurations will be occurred in this pattern. अगर ये नहीं याद है तो उसके अलावा हमारे पास एक सिंपल रूल दिस इज आल्सो कॉल्ड एज n+l रूल. फर्स्ट ऑफ वो ने जो हमें मेन पॉइंट दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी. फर्स्ट उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे विच हैव द लोअर एनर्जी एंड देन ऑर्बिटल्स विच हैव हायर एनर्जी आर फिल्ड आफ्टर दैट. सो you can also use another relation, this is n+l rule for the to decide the energy of different orbital. We can use n+l rule. What is this n+l rule? According to n+l rule, the orbitals which have higher value for the sum of n represent principal quantum number, l represent azimuthal quantum number. तो दो ऑर्बिटल which have higher value of n+l will filled after which have lower value. मतलब उन ऑर्बिटल्स में हम इलेक्ट्रॉन पहले फिल करेंगे जिनमें n+l की वैल्यू क्या होगी कम, और जिन ऑर्बिटल्स में n+l की वैल्यू क्या होगी हाई, उनमें हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे बाद में फिल करेंगे. सो n+l हाउ यू विल कैलकुलेट, इट इज फॉर द 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d. जो भी हमने ट्रेंड पहले किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको लिखा. तो लेट्स चेक इट बाय द हेल्प ऑफ n+l. n वैल्यू ऑफ principal quantum number, l azimuthal quantum number, it is 1, so principal quantum number 1, here 2 principal quantum number, 3 4 and here is 3. Now you can check the azimuthal quantum number for s, value is 0. s के लिए azimuthal quantum number 0, p के लिए 1 0, p के लिए 1 0, d के लिए क्या आता है, it is 2. तो सम इनका कर देते हैं. सम इन ऑल दीज केसेस द सम कम आउट टू बी 1, हेयर 2, इट इज 3, इट इज आल्सो 3, इट इक्वल टू 4, इट इज आल्सो इक्वल टू 4 एंड इट इज इक्वल टू 5. सो यू कैन चेक इलेक्ट्रॉन्स इन इंक्रीजिंग एनर्जी. एनर्जी विल इंक्रीज लाइक दिस. यू कैन इजली चेक बाय द फर्स्ट मेथड which is represented 1s 2s 2p up to 7, then p and then d and then f, and you can also check by n+l rule. But electrons first filled in 1s then 2s then 2p then 3s then 3p, they can be checked by using this. n+l value is 1, here is 2, this is 3, there is also 3. यहाँ पर देखेंगे तो it is 4 and 4. तो इन दो केसेस में हम देख सकते हैं n+l वैल्यू इज इक्वल टू 3 and 3, मतलब these values are same and there is 4 and 4. Then how you will decide which orbital have lower energy and which one have higher energy? Then if the same value of n+l is comes, then we compare the value of principal quantum number, because here n+l is 3, दोनों केसेस में क्या आया, it is 3, but here principal quantum number is 3 and it is 4, so it has lower energy. यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे कि दोनों की वैल्यू n+l की क्या है, इन केस ऑफ द 3s एंड 4s इट इज इक्वल टू 4, बट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हेयर इज 3 एंड हेयर इज 4. सो वी कैन से दैट 3p हैज़ लोअर एनर्जी देन 4s एंड 2p हैज़ लोअर एनर्जी देन द 3s. So this is also an important rule for filling of the electron in the different orbital, Hofbauer principle and n+l rule. Both are used to decide the energy of different orbitals. Our next is Hund's rules of maximum multiplicity.
फर्स्ट हमने स्टडी किया पॉली एक्सक्लूजन, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की जो क्या है सेम स्पिन नहीं होगी किसी भी ऑर्बिटल्स में, या 4 डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ऑर्बिटल्स की वैल्यू हमेशा सेम नहीं रहेगी। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव 4 same value of 4 quantum number according to Pauli exclusion, या they have the opposite spin, and according to Hofbauer principle the electrons are filled in increasing order of their energy. And how you will decide it? By using the trend or by using the n plus l rule. Now our last is Hund's rule of maximum multiplicity. This rule is given by Hund's. According to this rule, the electron pairing in p, d and f orbitals will occur. Electron pairing in p, d, f orbitals will occur until each orbital of given subshell contain 1 electron. इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन पीडीएफ ऑर्बिटल्स विल नॉट अकर, जब तक नहीं आएगी, until each orbital of given subshell contain 1 electron. सो यहाँ पर हुंड्स रूल्स ने हमें क्या बताया कि जब तक हर ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं आ जाएगा तब तक हम उनमें पेयरिंग नहीं करेंगे। लेकिन हमने कहा कि इसके लिए फॉर द पी, डी एंड एफ, क्योंकि एस के लिए हम बात करें ओनली 1 ऑर्बिटल, सो इसमें तो जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तभी हम पेयरिंग करने स्टार्ट करेंगे। लेकिन पी के केस में हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हम ऐसे भी कर सकते हैं एक में आए कि यहीं पर पेयरिंग कर दे, ऐसा नहीं होगा। हमें पहले सभी के अंदर ईच ऑर्बिटल शुड ऑक्युपाई सिंगल इलेक्ट्रॉन, देन वी स्टार्ट पेयरिंग। सिमिलर इन केस ऑफ द डी, in case of D also first we fill single electron 1 2 3 4 and 5. This is our D subshell. Then we start pairing. Okay, and similar for the F subshell. This is for the F subshell. We filled first single electron and then pairing will occur. We will pair it. सो अगला अगर हमें यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के बाद ही पेयरिंग, इसमें तो कोई हमारा पॉइंट ही नहीं है। इन केस ऑफ पी फर्स्ट फील्ड सिंगल इलेक्ट्रॉन इन आल्सो डी एंड इन आल्सो ऑफ द एफ सबसेल एंड देन पेयरिंग विल स्टार्ट। बट देयर इज वन मोर पॉइंट इज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। द टोटल स्पिन ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी मैक्सिमम। दिस इज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होन्स रूल। क्या कहता है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी मैक्सिमम। total spin of electrons should be maximum. What is total spin? Means जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फिल किए हैं their spin should be maximum. And how it will come maximum? Because when pairing occur, spin occur in opposite direction. जैसे ही हम किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, वन इन द क्लॉकवाइज एंड सेकंड शुड बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो देयर स्पिन कैंसल ईच अदर। तो हाउ इट विल बिकम मैक्सिमम? तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इन केस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यू नो अबाउट द नाइट्रोजन,
तो नाइट्रोजन के केस में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर इज 7, सो देयर आर 1s, दिस इज आवर 2s एंड दिस इज आवर 2p, 1s 2s एंड 2p। हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी किस तरह से इस केस में फाइंड आउट करेंगे? इट कैन बी इन द 3 वेज। हम 3 तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, A, B एंड C। तो फिर सभी केसेस में हम मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी वाले को इसमें क्या है करेक्ट करके दिखाएंगे। जैसे फर्स्ट केस में 1s 2 2s 2 तो 4, और इसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से फिल कर दिए। S वाले में तो क्या है पेयरिंग तभी स्टार्ट हो जाएगी। तो पेयरिंग के लिए हमने लिखा किसके लिए P, D एंड फॉर द F सब सेल, बट हेयर वी कैन आल्सो राइट इट लाइक दिस। यहाँ पर अगर हम स्पिन निकालें तो स्पिन फॉर ओनली फॉर द अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दीज आर 3, सो इट कैन बी 3 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, so it will come out to be 1:1/2. In this case, what is the total spin? 1/2 plus में it is in the below anti-clockwise, so it will come out to be -1/2 and last is 1/2. तो ये cancel, तो total spin come out to be 1/2. And in this case, this spin is cancel with each other, only 1/2. So you can easily understand it by use of nitrogen configuration 1s2 2s2 2p3। तो p सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग होगी वो किस तरह से? इट विल बी लाइक दिस, दीज आर इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू द होल्स रूल, बिकॉज मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी शुड अकर, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हमारी आनी चाहिए, एंड इट कम आउट टू बी इन केस ऑफ दिस 1:1/2, हेयर 1/2, हेयर इज आल्सो 1/2। दिस इज अकॉर्डिंग टू द होल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो हमने इस केस में देखो क्या क्या स्टडी कर लिया। हमने लास्ट लेक्चर में हमने वी हैव स्टडीड अबाउट क्वांटम नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। उससे फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। एंड इन द दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट वन एग्जांपल फॉर द ऑर्बिटल्स एंड सेकेंड quantum number, and now we have discussed 3 or 4 rules. First we have studied Pauli exclusion, simple, no two electrons will have same spin, यह 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। सेकंड हमने हाफ बाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन विल फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, और फिर उसके बाद हमने इंक्रीजिंग एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए 2 चीज़ें सीखी। फर्स्ट एक डायग्राम की हेल्प से, सेकेंड विद द n+l रूल, यू कैन इजिली फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच वन हैव हायर एंड विच वन हैव लोअर। उसके बाद हमने क्या है हूल्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि 2 इलेक्ट्रॉन्स जो भी हमें क्या है जब इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल्स में फिल कर रहे हैं तो उनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए? इट शुड बी मैक्सिमम। इसको हमने स्टडी किया विद द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कॉन्फ़िगरेशन में दिस वन इज करेक्ट एंड बोथ दीज आर इनकरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इन पे क्वेश्चंस ट्राई कीजिए और इसको सोल्व, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व कीजिए, को सीबीएसई के अकॉर्डिंग ज़्यादा हमारे क्या है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस प्रेफर किए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।